Hello, there is a little mistake. In last lectures we have seen the neuroglial cells are there are four types of cells present in central nervous system, and peripheral nervous system there are two types of cells, Schwann cells. Hello students, we are studying nervous system, central nervous system. Till now we have seen there are two types of cells from which nervous system is formed, that is neuroglial cells and neurons. Neurons are present in both central nervous system and peripheral nervous system. They both are same, but neuroglial cells are different in central nervous system and different in peripheral nervous system. In central nervous system we have seen astrocytes, ependymal cells, microglial cells, oligodendrocyte cells, and in peripheral nervous system we have seen Schwann cells and satellite cells. So yesterday, last lecture we have seen the astrocytes. Astrocytes are, we have seen the astrocytes are the cells which forms the blood-brain barrier. Means it provides a barrier to pass any any poison or chemicals to the brain. It protects the brain, and we have also seen that ventricles of the brain, means there are ventricles, means if this is I'm taking this sagittal section, if I'm taking the lateral part one part of the hemisphere, these are the two hemisphere. So if I'm taking one side and I will cut this, it will see like this. There are lateral ventricles in both the hemisphere. There will be lateral ventricle like this. This is left and right ventricles. So I have made this sagittal section. So means lateral ventricle is here and here also. Lateral means this is all lateral, and in middle there is a third ventricle, and continuation part, the descending part is fourth ventricle. So we have seen in last lecture, this is the lateral ventricle, this is the third ventricle, and this diamond shape is our fourth ventricle, and this is a median aperture. We have seen that in this is our choroid plexus. This is our corpus callosum, which is connecting the both the spheres, cerebral hemispheres together. So this part is choroid, this part is corpus callosum. In last lecture we have seen, and somewhere here these are the choroid plexus, which forms the CSF cells, that is the cerebrospinal fluid, which act as a cushion, means shock absorber. Cerebrospinal fluid, CSF. ओके, ये यहाँ पे बनता है, ये ट्रैवल करता है, थर्ड वेंट्रिकल पे जाएगा और इस तरह से फोर्थ वेंट्रिकल पे आता है, और ये मेडियन एपरेचर से इट विल गो टू द होल meninges. Meninges means covering of the brain. So our whole brain is covered by the layers of meninges. The outermost layer, we know it is called pyometer. बाहर से अंदर की ओर pyometer, then arachnoid matter, and the outermost is durameter. Dura matters. Dura means you can say durable. So this is the outermost layer. So you can remember like this कि dura सबसे strong है, it is outermost layer. Then middle one is arachnoid, and the innermost is pyometer. Pyometer is the innermost. Okay, so you can easily remember as a DAP, that is DAP, और from outer to inner जाएंगे तो DAP टैप. ओके, और अगर इनर से आउटर गया तो PAD. इट्स अप टू यू हाउ यू रिमेंबर दिस, बट आई थिंक दिस इज इजी. ड्यूरा मीन्स ड्यूरेबल, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर. सो यहाँ से जो भी फॉर्म हुआ है इस एपर्चर के थ्रू ये पूरा मूव करेगा, एंड इट विल प्रोवाइड कुशन टू आवर
एज द नेम सजेस्ट सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड मीन्स पूरा सेरेब्रम, पूरा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगा, मीन्स ये पूरा प्रोवाइड करेगा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को कुशन की तरह. सो इफ देर इज एनी मीन्स जब भी कोई हिट हुआ ब्रेन में, सपोज a person get hitted on his head, but he don't get hemorrhage immediately. How? Why? Because this cushion, this cerebrospinal fluid will act as cushion, and this will distribute the force or the jerk to the whole body. Okay, and thus it will provide the this brain and this our brain materials, so that our brain is saved from that jerk and immediately hemorrhage नहीं होगा जब तक कि बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगेगा. So this is very important. Cerebrospinal fluid, it is formed from the choroid plexus. Now oligodendrocyte cells, what they do, they form the myelin sheaths. We have seen that this is the structure. अगर हम लोग ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं, this is suppose the structure of our neuron. Suppose this is the dendritic part and this is our axonal part. तो यहाँ पे myelin sheet form होती है. Now this oligodendrocyte, they form the myelin sheets so that there will be hopping or jumping of the impulses. तो जहाँ पे myelin sheet present होता है, क्या होता है, कंडक्शन इम्पल्स का फास्टर होगा, देर भी फास्टर इम्पल्स, जो भी इम्पल्स जाना है फास्ट होगा एक्शन. सो these oligodendrocytes makes myelinated sheet in neurons. ये था, ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया था. CSF तो कॉर्ड प्लेक्सस बनाता है, कॉर्ड प्लेक्सस इस फॉर्म यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे, ठीक है. अब जो एपेंडाइमल सेल्स है, व्हाट दे डू, यहाँ पे जो बना था ये ट्रैवल करके यहाँ तक क्या, हाउ ciliated cells होने चाहिए, तो ependymal cell will provide ciliated action. So function of the ependymal cells are ciliated cells which convey this, which helps in the movement of the CSF fluids forward from where it is formed in this choroid plexus. They form in the lateral ventricle. They travel with the help of ependymal cells from lateral ventricle to third ventricle, fourth ventricle, median apparatus से होता हुआ पूरा meninges से होता हुआ पूरा आपका स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है. वी कैन से CSF फ्लूइड, जब इन्फेक्शन होगा CSF फ्लूइड में तो हम लोग क्या कहते हैं, meningitis. You have seen, you have heard meningitis. Now meningitis, meninges means these are meninges, the covering जो होते हैं ना, ये जो headurometer, arachnoid parameter, these are called meninges. So whenever there is an infection, means there will be infection. So यहाँ पे क्या होगा, फ्लूइड जो होगा लेवल उसका हाई हो जाएगा, इन्फेक्शन है तो यहाँ पर स्वेलिंग होगा, तो स्वेलिंग इज आइटिस. मेनिंजेस में है अगर स्वेलिंग, मेनिंजाइटिस. अगर लीवर में है, लीवर, हेप मीन्स लीवर, सो हेपेटाइटिस. कंजक्टिवा, आई में कंजक्टिवा है तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है तो क्या है, कंजक्टिवाइटिस. सो आइटिस इज दैट. सो देयर विल बी meningitis in brain, that is the infection in this cerebrospinal fluid. So we have seen astrocytes, they form the blood-brain barrier, provide nutrition to the neurons. Astrocytes जो होते हैं neurons को nutrition provide करते हैं through the blood. Ependymal cells, they forms the ciliated movements so that CSF can travel from the ventricles, all ventricles, to in the meninges. Macroglial cells, the word macro means small, this microorganism, glial means which do phagocytosis, means macroglial cells, they digest the debris and thus they clarifies. Okay, जो भी CNS में जो भी debris होंगे, जो भी होगा हमारे central nervous system में debris, they will engulf. These are macroglial cells. So we have completed 4 types of cells in CNS. Now see peripheral nervous system, there are 2 types of cells. So Schwann cells are similar to astrocyte cells, means what they will do, they will do what the astrocytes are doing, they will provide the blood brain barrier, okay, then they provide nutrition and the support. And what these satellite cells are doing,
oligocyte cells. What are oligocytes? Oligodendrocyte cells are doing, they will perform this similar activity. तो यहाँ astrocytes are similar to Schwann cells in peripheral nervous system, and oligodendrocyte cells are similar with satellite cells. They will do the same function which oligodendrocytes perform in central nervous system. In the peripheral nervous system, satellite cells will do same thing. Whenever there is a injury, जब भी ब्रेन में कभी भी इंजरी होता है तो यही जो है हमारा CSF मेंटेन करता है, प्रोटेक्ट करता है. इट इज़ अ प्रोटेक्टिव liquid, we can say it is a protective, give protection to the brain. The three layers we have discussed, and this structure we have discussed. Now we will discuss lobes of brain. So now up to this we have discussed the neurons and neuroglial cells, the structures of the brain. Now we will discuss the lobes of brain. One more thing, एक चीज़ छूट रहा है, जो हमने ये देखा था कि ऐसा हमारा ब्रेन है स्पाइन, और ये स्पाइनल कॉर्ड है, और ये ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन है, और ये ब्रेन स्टेम है, और यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड है. तो ये स्ट्रक्चर था. तो हमने देखा था, वी हैव सीन कि यहाँ पे सेल बॉडीज़ थे ना, हमने जो देखा था ये सेल बॉडीज़ थे, और यहाँ पे इसके फाइबर्स थे लाइक दिस, और ये अपवर्ड डाउनवर्ड साइडवेज ऐसे जा रहे थे. तो और जो स्पाइनल कॉर्ड होगा वहाँ पे जस्ट उल्टा होगा, यहाँ पे इसके क्या होंगे, सेल बॉडी सेंटर में होंगे, एंड एक्सोनल जो एक्सॉन्स होंगे वो साइड में होंगे. तो ये तो क्लियर था, ठीक है, जो एक्सॉन्स है वो साइड में हो गए. तो ये वाइस वर्सा. तो देयर विल बी क्रॉसिंग ऑफ फाइबर्स. तो जो स्पाइनल कॉर्ड में क्रॉसिंग होता है उसको रेटिकुलर फॉर्मेशन कहते हैं. वी विल स्टडी दैट इन लेटर लेक्चर्स. अब तो यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है.